वन लाइनर्स। 1. विनय पिटक क्या है और यह किससे संबंधित है? What is the Vinay Pitaka and what is it related to? Answer: a Buddhist text containing rules and regulations for the Sangha, monks and nuns. 2. त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से हैं? What are the 3 parts of the Tripitaka? Answer: Sutta Pitaka 10,000 Buddha sermons, Vinay Pitaka monastic rules, and Dhamma Pitaka philosophy and doctrine. 3. सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है और यह भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना? What is Sarnath famous for and what number UNESCO World Heritage Site did it become in India? Answer: Buddha delivered his first sermon here. It became India's 45th UNESCO World Heritage Site. 4. सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया और इसका महत्व क्या है? Who built the Sarnath pillar and what is its significance? Answer: Emperor Ashoka built it. Its lion capital became India's national emblem. 5. ऋग्वेद किस काल से संबंधित है और इसे कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? Which period does the Rigveda belong to and into how many mandalas is it divided? Answer: Early Vedic period, divided into 10 mandalas. 6. ऋग्वेद की संरचना क्या है? What is the structure of the Rigveda? Answer: 10 mandalas, suktas, hymns, anuvakas, sections, individual mantras. 7. ऋग्वेदिक शब्दावली में संहिता का क्या अर्थ है? What does संहिता mean in Rigvedic terminology? Answer: a systematic compilation of hymns and mantras collected together. 8. हर्यंक वंश की स्थापना किसने और कब की? Who founded the Haryanka dynasty and when? Answer: Bimbisara, established 544 BCE. 9. हर्यंक वंश का उत्तराधिकार क्रम क्या था? What was the succession order of the Haryanka dynasty? Answer: Bimbisara Ajatashatru Udain. 10. त्रिपक्षीय संघर्ष ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में किसने जीत हासिल की और यह किनके बीच था? Who won the tripartite struggle and between whom was it fought? Answer: Rashtrakutas won, fought between Rashtrakutas, Palas, and Gurjara Pratiharas over Kannauj. 11. शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किन 2 युद्धों में हराया? In which 2 battles did शेर शाह सूरी defeat हुमायूं? Answer: Battle of Chaucer and Battle of Bilgram Kannauj. 12. हुमायूं ने सत्ता वापस कैसे पाई और उसकी मृत्यु कब हुई? How did Humayun regain power and when did he die? Answer: Defeated Sikandar Suri, Sher Shah's son, at Battle of Sarhind in 1555, died in 1556. 13. बाबर ने दिल्ली कब और किसे हराकर जीता और इससे पहले उसने कहां आक्रमण किया था? When did Babur capture Delhi and whom did he defeat? Where had he attacked before? Answer: Captured Delhi in 1526 by defeating Ibrahim Lodi. Before this he conquered Bhera near Jhelum River, present-day Punjab, Pakistan in 1519. 14. राजा राम मोहन राय ने कौन-कौन सी समाजें स्थापित की और कब? Which societies did Raja Ram Mohan Roy establish and when? Answer: Atmiya Samaj in 1815 and Brahmo Samaj in 1828, both in Kolkata. 15. ब्रह्म समाज की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? What were the main features of the Brahmo Samaj? Answer: Monotheism, worship of one eternal God, no idol worship, rejection of caste system and divine incarnations. 16. भक्ति परंपरा में सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? What is the difference between Saguna and Nirguna Bhakti in the Bhakti tradition? Answer: Saguna Bhakti, idol image worship, Krishna, Ram, Shiva devotees. Nirguna Bhakti, formless worship without idols, saints like Kabir Das and Guru Nanak Dev. 17. महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल कब, कहां और किस लिए की? When, where, and for what reason did Mahatma Gandhi undertake his first hunger strike? Answer: 1918 during the Ahmedabad mill strike, to support workers against mill owners, successfully securing a 35% salary increase. 18. कनकलता बरुआ कौन थी और उनकी मृत्यु कैसे हुई? Who was Kanaklata Barua and how did she die? Answer: a young female revolutionary from Assam affiliated with Mrityu Vahini death squad. She was shot by Indian police while hoisting the national flag during the Quit India movement. 19. मृत्यु वाहिनी दल का नेतृत्व किसने किया? Who led the मृत्यु वाहिनी death squad? Answer: पुष्पलता दास and ज्योति प्रसाद अग्रवाल. 20.
चापेकर बंधु कौन थे और उन्होंने किसे मारा? Who were the Chapakar brothers and whom did they kill? Answer: Damodar, Balakrishna, and Vasudev Chapakar. They killed British official W.C. Rand, a plague official in Pune, Maharashtra during the 1897 plague. 21. गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी और यह कौन सा गणतंत्र दिवस था? What was the theme of Republic Day 2026 and which Republic Day was it? Answer: 150 years of Vande Mataram. It marked 77 years of Republic Day. 22. गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे और उनके पद क्या थे? Who were the chief guests at Republic Day 2026 and what were their positions? Answer: Antonio Costa, President of European Council, and Ursula von der Leyen, President of European Commission. 30. 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित 5 व्यक्तियों के नाम बताइए. Name the 5 recipients of Padma Vibhushan in 2026. Answer: Dharmendra Singh Dole, V.S. Achyutanandan, N. Rajam, K.T. Thomas and P. Narayanan. 24. 2026 में पद्म भूषण और पद्म श्री कितने लोगों को मिले? How many people received Padma Bhushan and Padma Shri in 2026? Answer: 13 received Padma Bhushan and 113 received Padma Shri. 25. मगध साम्राज्य का पहला प्रमुख और शक्तिशाली वंश कौन सा था? Which was the first prominent and powerful dynasty of the Magadha Empire? Answer: Haryanka dynasty founded by Bimbisara in 544 BCE. 26. शेर शाह सूरी ने किस साम्राज्य की स्थापना की? Which empire did शेर शाह सूरी establish? Answer: Second Afghan Empire. 27. गुर्जर प्रतिहार वंश मुख्यतः किस क्षेत्र में आधारित था? The Gurjara Pratihara dynasty was primarily based in which region? Answer: Central Western India. 28. ऋग्वेद को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? How is the Rigveda correctly described? Answer: A collection of hymns across ages. 29. भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्ब्लम किस स्तंभ से लिया गया है? India's national emblem is taken from which pillar? Answer: Sarnath pillar built by Emperor Ashoka. 30. W.C. Rand कौन थे और उन्हें किसने और कहाँ मारा? Who was W.C. Rand and who killed him and where? Answer: A British plague official appointed during the 1897 plague, killed by the Chapakar brothers in Pune, Maharashtra. 31. त्रिपिटक में सुत्ता पिटक में कितने बुद्ध के उपदेश हैं? How many Buddha sermons are there in the Sutta Pitaka of the Tripitaka? Answer: 10,000 Buddha sermons. 32. हर्यंक वंश की स्थापना से पहले मगध पर किस वंश का शासन था? Which dynasty ruled Magadha before the establishment of the Haryanka dynasty? Answer: The Brihadrata dynasty ruled Magadha before the Haryanka dynasty. 33. अजातशत्रु किसका पुत्र था और उसने किसे मारकर सत्ता प्राप्त की? Whose son was Ajatashatru and whom did he kill to gain power? Answer: Son of Bimbisara. He killed his father Bimbisara to gain power. 34. राष्ट्रकूट वंश ने कन्नौज पर अधिकार के लिए कितने वर्षों तक संघर्ष किया? For how many years did the Rashtrakutas struggle to conquer Kannauj? Answer: 150-200 years. 35. बाबर ने भेरा पर आक्रमण किस नदी के पास किया था? Near which river did Babur attack Bhera? Answer: Jhelum river in present-day Punjab, Pakistan. 36. आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों में क्या समानता थी? What was common between the Atmiya Samaj and Brahmo Samaj? Answer: Both practiced monotheism, worship of single eternal God, and rejected idol worship and caste system. 37. कबीर दास और गुरु नानक देव किस प्रकार की भक्ति के प्रतिनिधि थे? Which type of bhakti did Kabir Das and Guru Nanak Dev represent? Answer: Nirguna Bhakti, formless worship without idols. 38. कृष्ण, राम और शिव के भक्त किस प्रकार की भक्ति का पालन करते हैं? Which type of bhakti do devotees of Krishna, Ram, and Shiva follow? Answer: Saguna Bhakti, idol image worship. 39. अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में मजदूरों को कितने प्रतिशत वेतन वृद्धि मिली?
What percentage salary increase did workers get in the Ahmedabad mill strike of 1918? Answer: 35% salary increase. 40. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के नाम बताइए. Name the President of the European Council and the President of the European Commission. Answer: President of European Council Antonio Costa, President of European Commission Ursula von der Leyen. The 28th of July 2026 Current Affairs. 1. सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में भारत के 45वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया. Sarnath was inscribed as India's 45th UNESCO World Heritage Site during the 48th session of the UNESCO World Heritage Committee. 2. ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का पहला पदक पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने जीता. पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार won India's first medal at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. 3. अनाहत सिंह वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय बनी. Anahat Singh became the first Indian to win the World Junior Squash Championship. 4. वोल्कर तुर्क का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में कार्यकाल 4 वर्ष के लिए बढ़ाया गया. Volker Turk's mandate as the UN High Commissioner for Human Rights was renewed for 4 years. 5. चिनार पुस्तक महोत्सव का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया. The Chinar Book Festival was held in Jammu and Kashmir. 6. पंजाब सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक आई शिक्षा के लिए सरबत AI पहल शुरू की. The Punjab government launched the Sarbat AI initiative to introduce AI education from classes 1 to 12. 7. मध्य प्रदेश विधानसभा ने जुलाई 2026 में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC विधेयक 2026 पारित किया. The Madhya Pradesh Legislative Assembly passed the Uniform Civil Code UCC Bill 2026 in July 2026. 8. भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन जलयान लॉन्च की गई. India's first solar-powered mobile water purification van जलयान was launched. 9. हुसैन अली मविनी ज़ांज़िबार के राष्ट्रपति हैं. हुसैन अली मविनी इज द प्रेसिडेंट ऑफ ज़ांज़िबार. 10. अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया. अनुराग जैन was appointed as the Chief Executive Officer CEO of नीति आयोग. 11. किलाड़ी पुरातात्विक स्थल वैगई नदी की घाटी में स्थित है. The Kiladi archaeological site is located in the Vagai River Valley. 12. T.K. अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया. T.K. अनिल कुमार was appointed as the Secretary of the Department of School Education and Literacy. 13. मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता. मीराबाई चानू won India's first gold medal at the 2026 Commonwealth Games. 14. ONGC ने महानदी के अपतटीय बेसिन में अपना पहला डीपवाटर अप्रेजल वेल खोदा. ONGC drilled its first deepwater appraisal well in the offshore basin of the Mahanadi River. 15. अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग के लिए 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए. The United States signed a landmark 123 agreement for peaceful civilian nuclear cooperation with Saudi Arabia. Previous question answer. Kargil Vijay Divas is observed every year on which date? Answer B. July 26th. Kargil Vijay Divas is observed every year on July 26th to commemorate India's victory in the Kargil War of 1999. Question of day. PM Modi announced a high-powered task force on examination reforms on July 26, 2026. Who was appointed as its chairman? A. N.R. Narayana Murthy. B. Nandan Nilekani. C. Sam Pitroda. D. Raghuram Rajan. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affairs and GKGS.